5. Okay, reframing. Just you know that in NLP, a reframe is changing the meaning of communication by changing the context. You know, either context you can change or the contents. There are two things: content and that is context, right? And this is what is it? Basically, reframing is a process through which a problematic, listen it carefully, I'm very. Reframing is a process through which a problematic behavior is separated from the positive intention of the internal or part that is responsible for the behavior. Means any behavior or any, you can say, the intention, because every behavior or every action has the positive intention. That is the presupposition of NLP. So that's why we are having whatever the behavior inside, हम वहां पर पॉजिटिव इंटेंशन जरूर रख रहे होंगे. तो हमने क्या करना होता है कि वी हैव टू रिफ्रेम इट बाय सेपरेटिंग थॉट. पॉजिटिव इंटेंशन और इंटेंशन को हम सेपरेट कर देंगे किससे? जो रेस्पॉन्सिबल है उस बिहेवियर के लिए, क्योंकि उसको तो लग रहा है कि ये पॉजिटिव है तो उसने रखा हुआ, तो उसके इंटेंशन को ही हम सेपरेट करते हैं, रिफ्रेम करेंगे, राइट? तो और इसके अंदर क्लियर समझ आ गया होगा. तो उसमें रिफ्रेम कर दिया. न्यू चॉइसेस ऑफ बिहेवियर आर एस्टैब्लिश्ड बाय हैविंग द पार्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर ओल्ड बिहेवियर take responsibility for implementing other behavior that satisfy the same positive intention but don't have the problematic byproducts. Very easy. देखो उसने क्या किया, उसके बिहेवियर को जो वो पॉजिटिव सोच के साथ उस बिहेवियर को बिल्डअप किया हुआ था उसको वही रखा, पर किया क्या, उसने उसको सेपरेट करके कोई पुराना जो कोई बिहेवियर था जिसमें कि इंटेंशन अच्छा होगा उसके लिए, उस पॉजिटिव इंटेंशन को लाके उसके साथ अटैच कर दिया. तो हुआ क्या कि जो उसका बिहेवियर था उसके पॉजिटिव इंटेंशन को बाहर से लाकर दूसरे बिहेवियर से, जो कि वास्तव में ठीक बिहेवियर है या नहीं है, डजंट मैटर, उसको लाकर उसने उसके साथ इस्टेब्लिश कर दिया, उसके साथ इंस्टॉल कर दिया. नाउ फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस दैट चूज अ रिजल्ट ऑफ योर बिलीफ अबाउट योरसेल्फ एंड अदर्स. यू perceived a role in life, you perceive a limitation, the skills, abilities can limit what you see as possible or can open up all sorts of possibilities, you whatever you can have in your life. So this is all about, you can just do it without real thoughts about the consequences or if the limitations are true. Doesn't matter, you have to change, you have to replace the bad behavior by separating the positive intention with the good behavior with the positive intention of the whatever the behavior out there. Okay, changing the frame here, see, this is very important para. Changing the frame of an experience can have a major influence on how you perceive, interpret and react to that experience. Being told that you have an hour to complete a task will most likely result in a different emotional state, approach and quality of work that if you are told that you have 1 week to accomplish the same task. This illustrates how a change in frame, in this case the time frame, means you have to change the time frame because you have to complete in a certain period of time. So you have to change the time frame, can have a significant impact on the choices you make. Changing the frame of reference is called reframing in NLP. It is so simple. Changing the frame of reference, whatever it is, like internal reference, frame of internal reference, frame of external reference. If you change this, means from internal to external, means you are reframing the motivation. There are two types of internal motivation, external motivation.
internal motivation always, are permanent. External motivation is not permanent. So in this case, you have to reframe that reference of the frame of reference. I hope you must understood that. Must have understood that. So there are few examples. तो वो एग्जाम्पल बेसिकली इसके अंदर आपने देखा होगा कि पॉलिटिशियंस होते हैं, वो अगर एक पॉइंट अगर अपोजिशन के ऊपर भी बोले तो अपोजिशन के लिए जो भी उनके श्रोतागण हैं, जो भी उनके ऑडियंस है, वो लोग सही मानते हैं, क्योंकि वो लोग रिफ्रेमिंग में बड़े ही एक्सपर्ट होते हैं. हमेशा याद रखना, अगर आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल और कन्विंसिंग स्किल और अपने वाक शक्ति का प्रयोग करना है तो रिफ्रेमिंग को आपको करना आना चाहिए. तो